Alright, so we are currently live. I hope मेरा आवाज़ clearly आ रहा है एंड अभी आई गेस 15 मिनट है फॉर द लॉन्च. टिल देन ये NSIL का एक ब्रोशर है जिसके अंदर पूरे मिशन का ब्रीफ दिया हुआ है और इसको अच्छे से देख लेंगे. एंड आई एम currently design this particular rocket in Kerbal Space Program. So let me show that to you. Check over here. So I'm currently designing the PSLV itself. तो वी लॉन्च दिस साइमल्टेनियसली विद द एक्चुअल रॉकेट. ये तभी लिफ्ट ऑफ करेगा जब एक्चुअल रॉकेट भी लिफ्ट ऑफ करेगा. सो दैट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू सी दैट. Okay, first of all, let's go to the brochure, see what details we have. Uh, this is the TELEOS 2 mission. So that is TE and then the LEO, I think, is for the low Earth orbit. So let's see, this is a Singapore's payload. Oh, yes, this is a synthetic aperture radar satellite, and this will be the primary payload on it. And Illumilite 4 is a technology demonstration nano satellite. Now, Bellatrix Aerospace neon engine or electric ion thruster is also going to be launched from this particular payload itself. And you can see over here the image is quite interesting. Let me show this to you. Check over here. This thing over here, this is very interesting because this over here is actually an expandable antenna. Let me show you any images if possible. Yes, yes, check here. This is the antenna. You can clearly see this. This entire thing will open up and it will work as a synthetic aperture radar. So the radar will require a parabolic reflector, and this will be a big reflector. And inside this there is a receiver on which the waves will be reflected, and then this payload will work. And over here you can see other payloads as well. These images are quite good in quality. So these over here are some other payloads, of which one is from Skyroot. I'm sorry, Bellatrix Aerospace as well. I guess this is the payload from Bellatrix. This is the nuclear electric propulsion engine, the ion engine. You can see the thruster of this particular engine right here. This is the thruster of the engine, and okay. So this over here is the thruster of this particular engine, right? And over here you can see some canister modules which will launch cube satellites. And this is the main payload. You can see how big the actual Earth observation satellite is, or the synthetic aperture radar is. Now I did actually an internship in using radars and those techs, so I have a little bit of idea as to synthetic aperture radars, and those are extremely complex and very very interesting technologies. Over here as well you can see the demonstration. Like, see over here, this is the engine. These are deployer modules. These will deploy CAN satellites. Okay, and this is the base module, the POEM module, uh, which is designed by ISRO. That is the fourth stage of ISRO's PSLV rocket, and the fourth stage will be used as a pseudo satellite, which is known as POEM, and this is the deployable antenna. Now what we'll do is we'll see if ISRO has started the stream, अगर ISRO ने launch कर दिया है stream. नहीं, ISRO ने stream start नहीं किया है. So till then we'll go to Kerbal Space Program and we'll design the PSLV rocket. And if you want to give any inputs as to designing this rocket, you can definitely give this. I'm referring to this brochure over here to design it. Okay, where's the brochure? Perfect. We'll refer to this and we'll design. So the stage 1, stage 1 has been designed, stage 2 has been designed, and we designing the stage 3 and the stage 4 coming. Okay, stage 2 is complete. Hi, rocket Thomas. Let me see. Okay, there is a playback error. I'm not sure if I'm able to stream that. Oh, never mind. So, we will not use this engine. Uh, some parts are not available in the stock. That is stock is the Kerbal Space Program
pre-made list of components that does not have some components which are specific to ISRO's PSLV rocket. So we will be customizing those particular parts. Now the fourth stage, which is the most important considering its design, let's design it. You can see there are two engines over here. So again, we are using two engines itself, but there are these cylindrical containers, right? So let's do one thing. Let's use the cylindrical containers for our design as well. Okay, fuel tanks. Yes, these are the external tanks, and I've increased the multiplication to 6. That's 4 is fine. And the fourth stage is inside the fairing, right? So we'll have to insert the fairing here as well. The fairing, okay, fairing encloses the rocket itself. Let's do one thing. Let's add the fairing here. Aerodynamics, okay, payload and fairing. We'll place the fairing later. This is it. And okay, there is this module, this adapter. Let me delete these and let us add those adapters over here. Right. I guess instructor. Yes, we have it. And then there are solar panels around it. Okay. There's a plate over here. Plate. Interesting. I'm not sure if. Okay. Fine. This is a bad idea, definitely. No. Let's use some. Yes, this is fine. Let's use a single tray. Okay. Who will do that? I'm not sure how to mount this. Maybe somewhat like this. Yes, we have mounted the plate on which all the satellites will stay. So let's go to science. There's science, yes, science. Add a single payload here. So this is basically a demonstration as to what the payloads will look like. We'll also try to get some science from this. And then there will be the main satellite over here. So have we got space for a main satellite? Yes, we have. Alright. And let's do one thing. Let's add a communication antenna over here so that this will deploy. Now this will look now definitely this is not the actual module and it is not meant to be the actual module, but it is similar. Let's see ISRO's live stream then. Very good. Okay. ISRO has not started the stream yet.
So we got the full four thrusters. Let's go to command and control and add some RCS controllers. So this is the reaction control system. Okay, all right. And don't need a stabilizer actually. Okay, this is fine. Now we'll add some solar panels as well. Where is the electric thing? Yes, electric. Normal solar panels. There are normal solar panels. I need batteries now. So good place to add batteries. And then I'll add the solar panels. Now, okay, these are big. Smaller ones, maybe? Yes. 8 will do. No problem. Yes. So this will generate the electricity for us. And yes, we have all of these. Now, we'll have to detach this thing, right? Okay. Let's lift this. Uh, Command and control. We'll need something to control the entire rocket. So we are going to use a controller. Okay. A single controller. Yes. Then we'll add a coupling. Okay. Alright. Single coupling. This way. And we'll attach this to it. So we have the rocket ready. And now let's build the fairing. Okay. Alright. So here we have a PSLV rocket complete. We'll need the side boosters as well, right? Yes. These are the boosters. This is in which configuration? Let me see. Like this. Only two boosters are needed. Because Singapore normally uses only two boosters. The single configuration. What I'll do is I'll increase the length of this. No. Alright, I'll go to aerodynamics and I'll get covers for this. No. Smaller covers. No. Maybe. Yes, these are good. Alright. We have the rocket ready. Yes. There is no color on this rocket, definitely. But that is fine. We can now change the name. PSLV. Fine. Now let us see if ISRO has started the stream. No, ISRO has not started its stream currently. So if ISRO does that, we'll know that. Okay. So let us design the rocket. Continue designing it. Mhm. Does look good. Will not fail most probably. Alright. Let's launch it. Now, first of all, let's see the stages. Okay. This is the first stage. Okay. Alright. Then there is going to be a separation. Okay. Then this engine will ignite. Okay. This engine. And then okay.
this separation, then the fairing separation, then comes the, okay, first comes the separation, then fairing. First this will ignite, then fairing separation, okay, then coupling, then fairing, then this engine, and after this engine we have the final separation as in this, okay, and we have the parachute switch. Okay, if you can bring the parachutes over here, fancy little improvement to the PSLV, and we are good to go for a launch. Okay, we had RLV BD over there. Here the launch pad and proceed. Okay, fine. So we are good to go for a launch currently, and till then let's see if ISRO has started the stream. No, ISRO has not started its stream. So we'll wait for ISRO. अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एज एन अपन क्या कर रहे हैं. सो मैं आपको बता देता हूँ बिकॉज इसरो को लॉन्च करने में थोड़ा सा वक्त है, इसलिए हम फिलहाल इसरो का ये जो रॉकेट है इसको लॉन्च कर रहे हैं एक गेम में जिसका नाम है कर्बल स्पेस प्रोग्राम. इसको अभी हमने डिज़ाइन किया एंड इसको लॉन्च करेंगे जब तक इसरो का लॉन्च चालू नहीं हो जाता. और अगर आप में से किसी को पता चलता है कि इसरो का लॉन्च चालू हो चुका है तो कमेंट सेक्शन में या चैट सेक्शन में बता देना एंड वी विल स्टार्ट विद इसरो का लॉन्च. सो करेंटली नहीं हुआ है तो अपन जल्दी से इस पर्टिकुलर रॉकेट का लॉन्च करते हैं जो कि PSLV के जैसा ही दिखता है एंड आई हैव मेड दिस इन कर्बल स्पेस प्रोग्राम एंड लेट्स गो फॉर अ लिफ्ट ऑफ एंड ignition. So we have an ignition over here. काफ़ी अच्छे से चल रहा है रॉकेट, आई हैव टू अग्री. ओके, डज लुक लाइक PSLV एज वेल. PSLV आपको क्या लग रहा है, सबको PSLV जैसा दिख रहा है या नहीं, आप बताइए कमेंट सेक्शन में ज़रूर. लग तो रहा है PSLV जैसा. By the way, I'm watching the chat also, so I'll get an idea if you guys are saying something. uh, let's see इसरो का लॉन्च चालू हुआ है क्या तब तक. नहीं, इसरो का लॉन्च नहीं चालू हुआ. ऑलराइट, we have made it to an altitude of 14 kilometers and the rocket is not the most stable. That's the reason I did not make any changes, like I did not turn it for very specific reasons, and that is because ये solid rocket boosters जो होता है ना, अगर मैं अभी इसमें ज़रा भी चेंजेस करूँगा along the latitudinal और longitudinal axis तो फिर रॉकेट माइट डिस्टेबलाइज बिकॉज इसमें गिम्बल्स नहीं है. ओके, तो विदाउट गिम्बल होता है ये मोस्टली, लाइक एक्टिव गिम्बल्स नहीं होते. सो ये स्टेज अभी हो चुका है यहाँ पर फिनिश एंड व्हाट विल डू इज इसको हम करेंगे इजेक्ट. ये गया हमारा फर्स्ट स्टेज एंड नाउ वी हैव द सेकेंड स्टेज ऑफ द रॉकेट विच इज़ अ लिक्विड प्रोपेल्ड इंजन एंड दिस इंजन इज द विकास इंजन. नाउ विल सेट एन ऑर्बिट, विल सेट एन ऑर्बिट फॉर द रॉकेट. लेट्स डू दैट फर्स्ट. ये हमारा एपोप्सिस है. एड अ मनूवर, लेट्स स्ट्रेच इट. ठीक है, अगर आप में से किसी को और कुछ सजेशंस है एज इन व्हाट वी शुड डू कैन टेल दिस. ऑलराइट, दिस इज फाइन फॉर नाउ. Okay, so let's activate the stability assist systems and go to the maneuver. Now what will happen is कि अभी ये रॉकेट जो है ये मनूवर मोड पे जा रहा है. इसका मतलब ये अब रेडी हो रहा है अपने ऑर्बिट में इंसर्शन के लिए. एंड इसरो का जो PSLV रॉकेट है वो भी कुछ ऐसा ही करेगा, अपने ऑर्बिट इंसर्शन के लिए रेडी हो जाएगा. एंड वंस नाउ दिस इज़ रेडी वी कैन इग्नाइट. सो अभी हम इसको इग्नाइट कर सकते हैं यहाँ पर. Add wrap here and we'll cancel the wrap at this time. And
T minus 44 seconds and node burn time is 1 minute 44 seconds. So we'll go for a burn. एंड आप देख सकते हो अभी रॉकेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर विल गो टू द designated orbit. So our engines will automatically take this PSLV's upper stage to where it is supposed to go. And fairings have not been separated. I know that because fairings were staged for something later, but I can deploy them. Let me deploy the fairings. Alright, I've deployed the fairings and we can see the rocket over here, the inner part. Because we are at a very high altitude and we did not care about uh, not opening the fairings because we are at about 185 kilometers and rising, which is very high. So no need to worry about that. तब तक देखते हैं कि इसरो ने लॉन्च किया नहीं. इसरो ने अभी तक लॉन्च चालू नहीं किया है. तो लेट्स लॉन्च दिस थिंग. लेट्स सी. ये रॉकेट बाय द वे इसरो के जैसा ही है. इफ़ यू गाइज वांट वी कैन आल्सो डिस्कस इसरो का जो रॉकेट है इसको. लाइक मेरे पास यहाँ पर एक ब्रोशर है. मैं आपको ब्रोशर दिखा देता हूँ जब तक ये ऑर्बिट में जा रहा है तब तक. ये देखिए, ये है वो ब्रोशर. Yes. Over here, there are all the details given by NSI, which is New Space India Limited. They have given all the details as to what the POEM orbital module looks like. You can see over here the entire rocket, its configuration. They have given details about the payload, which is interesting because this is a synthetic aperture radar. And synthetic aperture radar को अगर मैं आपको explain करूँ तो basically radars क्या करते हैं कि light waves को ही emit करते हैं, electromagnetic waves को, which is in sub gigahertz frequency. फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया और इसरो का एक मिशन लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है निसार या नाइसार. आई एम नॉट एबल टू राइट ओवर हियर. तो बेसिकली इस मिशन में भी सेम चीज़ होने वाली है. सो ऐसे ही सिंथेटिक अपर्चर रेडार्स काम करते हैं. और अगर आपको मैं बताना चाहूँ आई कैन मेक अ वीडियो अबाउट देम. आई कैन डेफिनेटली मेक अ वीडियो कि हाउ सिंथेटिक अपर्चर रेडार्स वर्क. लेट मी शो यू द गेम टिल दैट. ये देखिए, हम अभी फ़िलहाल ऑर्बिट में पहुंच ही रहे हैं. आप देख सकते हो वी आर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 180 और आई से 181 किलोमीटर्स. अगर मैं मैप में जाऊँ सो वी आर समवेयर ओवर हियर. ओके, गेस व्हाट वी हैव. ओह माय गॉड, वाओ. फाइन. So we have completed the burn. Let's just scratch this particular engine and let's do the final burn because हमने एक चीज़ ऐसी की है कि लेट्स सी इसरो का रॉकेट कौन से एल्टीट्यूड पे जा रहा है. लेट मी शो यू द विंडो कैप्चर. यहाँ पर हम देखेंगे पहले कि इसरो का जो रॉकेट है उसका एल्टीट्यूड क्या होने वाला है. ओके, यस, एल्टीट्यूड इज फॉर 584 किलोमीटर्स. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एट द मैक्सिमम टाइम दैट इज़ 1694 सेकेंड्स के बाद अल्टीट्यूड वुड बी 584 किलोमीटर्स. तो एक काम करते हैं, हमारे भी जो इसरो का रॉकेट हम लोग ने डिज़ाइन किया है उसको भी उसी ऑर्बिट में हम रख देते हैं. ठीक है. सो विल हैव टू क्रिएट अ ट्रू बर्न. ओके, ओके, 584 map. Let's go to the maneuver. And we have the engine over here. Let's go to the maneuver over here and ignition. आप देख सकते हो ये जो पोएम ऑर्बिटल मॉड्यूल है वो
कुछ ऐसा ही दिखता है, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस बट कुछ ऐसा ही। आप देख सकते हो यहाँ पर ना फेयरिंग ओवरहीट हो रहा है, बिकॉज मैं फेयरिंग के बाद कपलिंग डालना भूल गया। तो डोंट वरी, एक छोटा सा ब्लास्ट होगा अभी, बस, और कुछ। टेक्निकली वो ब्लास्ट से हमारे रॉकेट पे कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये कर्बल स्पेस प्रोग्राम है। यू कैन सी अर्थ ऑल्सो। So this over here is the final stage, and we are almost done with the entire rocket. Now let's hope कि यार इसरो ने भी अपना लॉन्च के लिए प्रिपरेशन, मतलब लॉन्च का स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया हो। नहीं, इसरो ने अभी तक लॉन्च का स्ट्रीम स्टार्ट नहीं किया है, बट आर पर्टिकुलर रॉकेट इज ऑलरेडी इन ऑर्बिट। Okay, that was bad. Fine, let's just stop that. So let us wait for a few minutes for ISRO's live stream. I'll have to refresh this. Okay, इसको refresh करते हैं। नहीं, इसरो ने अभी तक नहीं स्टार्ट किया। Maybe ISRO is waiting for 2019. Till then, we can take Kerbal Space Program again as well. So over here, you can see this is the entire launch configuration. And speaking of synthetic aperture radars, those are actually an interesting topic. Would be a bit difficult for me to explain it. Never mind. Let's wait for some time. इसरो का launch तो अभी तक चालू नहीं हुआ। If anybody has any suggestions as to what to do till ISRO's launch starts, you are uh, well, yes, free to suggest those. Till then, we can check out this PDF, or else we'll continue with Kerbal Space Program. Any suggestions as to what to do, let me know. Because इसरो का launch, I guess, थोड़ा time लेगा। हम currently देख रहे हैं इसरो का live stream। यहाँ पर nothing has started from ISRO side, so we can play Kerbal Space Program if needed, if we want to. Kerbal Space Program is starting. तब तक हम इस ब्रोशर में और कुछ डिटेल्स देखते हैं। सो ये है रॉकेट की डिटेल्स। पहले तो है RCT ignition, PS1, PS2. Okay, that's boring. Yes, POEM module. The interesting thing. POEM is actually the PSLV's orbital experimental module. एंड बेसिकली इसरो ने क्या किया कि जो फोर्थ स्टेज होता है उनके रॉकेट का, उसी को कन्वर्ट कर दिया एक सूडो सैटेलाइट में या एक सैटेलाइट में, आप कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ऑलराइट, ये जो है ये पूरा सैटेलाइट है, बट ये जो नीचे का पार्ट है, राइट, ये दिस विल एक्ट एज अ सैटेलाइट एज वेल। तो ऊपर का जो पार्ट है ये सिंगापुर की जो एजेंसी है उसकी तरफ से है, ये सिंगापुर की तरफ से है। एंड ये जो नीचे का पार्ट है ये है इसरो की तरफ से, जिसके अंदर अलग अलग पेलोड्स डाले गए हैं। सो इसके बारे में मतलब और डिटेल्स मैंने आई गेस एक वीडियो में बनाए थे, एंड आई हैव अपलोडेड दैट वीडियो ऑलरेडी, देख सकते हो आप। इवन गरीब साइंटिस्ट मेड अ वीडियो अबाउट दैट। ओके, लेट्स प्ले कवर्स दिस प्रोग्राम। स्टार्ट अगेन। ओके, इसरो का लाइव स्ट्रीम अभी भी चालू नहीं हुआ। मैं बीच बीच में देख रहा हूँ कि इसरो अगर लाइव स्ट्रीम चालू कर रही है, बट नहीं। ओके, ओके,
So let's let's go to our ISRO का rocket, our Chandra PSLV का module, which has the poem module. We can go to that over from here, the tracking station. You can see that it is going somewhere over here. Starter launcher, Ramona, PSLV. Okay, PSLV Pro. You can fly the PSLV Pro from. And here we are. So let's detach it. And this is our satellite. Let's activate the stability assist system. एंड अभी अगर आप देखोगे तो ये है वो पूरा सैटेलाइट, इसमें है 16 पैनल्स। एंड ये जो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है वो दिखेगा कुछ ऐसा, बट इसमें एक एंटेना भी होगा। सो लेट मी शो यू व्हाट दैट एंटेना विल लुक लाइक। तो कुछ ऐसा एक एंटेना होगा जो कि जब रॉकेट लॉन्च किया जाएगा तो क्लोज्ड होगा, बट जैसे ही ऑर्बिट में रॉकेट जाता है कुछ ऐसे ही वो जो एंटेना है वो एक्सटेंड हो जाएगा, एंड देन विल बी एबल टू सी the entire thing. So let me get this on the sunward side. This has enough view. Yes. So this is how it would look like. Check this. The entire antenna and everything. And we can start object tracking once we are in a solar orbit. So currently आप देख सकते हो इसकी trajectory जो एपोप्सिस है वो एक सोलर ऑर्बिट में ही है। एंड अब हमें सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा टाइम को एक्सटेंड करना है। सो अगर हम टाइम रैपिंग करते हैं, we'll get to the orbit or the designated place. We'll just go there. Okay. And now you can see our entire craft is in a sun synchronous orbit. So ये जो क्राफ्ट है ये अभी अर्थ के अराउंड नहीं घूमते हुए सन के अराउंड घूम रहा है, जो कि इसरो के ऑर्बिट में नहीं होगा। इसरो का जो पर्टिकुलर पेलोड होगा वो 500 किलोमीटर्स के ऑर्बिट में ही होगा, बट आर पेलोड इज डिफरेंट बिकॉज वी आर डिफरेंट अगेन। It will not be in that particular orbit, it will be in sun's orbit. This particular thing is in sun's orbit. So यहाँ पर देखिए अभी कुछ एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल दिस। तो ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पर भी है। इसरो की जो एक्सपेरिमेंट है या इसरो का जो पेलोड है उसके ऊपर भी ऐसे ही कुछ पेलोड्स या एक्सपेरिमेंट्स है। और वो जो एक्सपेरिमेंट्स है जो इसरो के साथ है उन सभी में आप ऑब्जर्व करोगे कि एक बहुत इंटरेस्टिंग पेलोड है, दैट इज फ्रॉम बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। सो बेलाट्रिक्स इज launching their custom ion engine into orbit. Ours is not an ion engine, but ours is a payload. Like I will show you the engine also. Check this. Check this. This is a rocket engine which we have inside, and this can detect a lot of stuff. So, you can quit to the main menu और let us see कि इसरो की तरफ से क्या अपडेट है तब तक। नहीं, इसरो ने अभी तक लॉन्च का लाइव स्ट्रीम स्टार्ट नहीं किया है, बिकॉज जैसे ही लॉन्च लाइव स्ट्रीम चालू हो जाएगा मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा। बट ऑल राइट लेट अस सी। आई गेस इसरो ने नो 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 अपडेट। Saved project over here, and go to the vehicle assembly building। एंड जो PSLV रॉकेट हम लोग ने अभी डिज़ाइन किया था ना उसी को PSLV। सो ये अपना PSLV है,
डेफिनेटली असली PSLV से थोड़ा अलग दिखता है बिकॉज कलर्स थोड़े अलग है. You can change the colors probably. Uh, you can change it to orange at my best. Nothing else. अब तो ये और भी अलग लग रहा है. So let's keep it the same. Definitely PSLV जैसा दिख रहा है. Let's go to the fourth stage. कुछ ऐसे दिखेगा. You can add an iron engine as well over here. Let's do that. Let's go in engines. There is a xenon thruster. Yes, there is one. But it is quite big, I'll say. You can attach it here, somewhere over here. Let's get the engine right here. Mhm. That is taking quite a lot of time though. What else? Do we have another engine? Yes. And just delete it. Launch the rocket. Okay. इसरो की तरफ से अगर कुछ update. No, that is quite strange. Like, okay, time जो दिया है that is 14:20. So launch का टाइम वो है बट इसरो का लाइव स्ट्रीम अभी तक चालू नहीं हुआ है. Which I'm not sure why. Let me see अगर कहीं पर लॉन्च दिख रहा है तब तक. Alright, let's go to game capture. Transform. Flip the screen. So this is a rocket in Kerbal Space Program. Hey, let me see the chat. चालू तो नहीं हुआ है डेफिनेटली. ओके, सभी लोग ब्रोशर में से जा रहे हैं तो कैसे सिस्टम आपके इसको तब लॉन्च करेंगे जब इसरो का रॉकेट लॉन्च हो जाएगा. तो एक काम करता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करता है. इसको इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा. ऑल राइट, एंड ये जो गेम कैप्चर है इसको कुछ यहाँ पर ले आते हैं. इस तरह क्या होगा कि जब रॉकेट लॉन्च होगा एक्चुअली में we will be able to see both the rockets launch at the same time. Let's do that. All right, we have this here. We have the browser. ब्राउज़र को इधर रखते हैं कुछ ऐसे.
दोनों भी रेडी है, ब्राउज़र भी है और हमारा एक्चुअल गेम भी। गेम को थोड़ा सा इधर भी लेके इसको कर लेते हैं। तो ये तैयारी अपनी हो चुकी फॉर द लॉन्च। राइट, ओके, दोनों चीज़ें मैच्ड है अच्छे से। एंड विंडो कैप्चर में जाके अभी हम देखते हैं, विंडो कैप्चर को भी थोड़ा सा छोटा करते हैं। लेट्स व्यू दिस, इसको देखते हैं पहले। 2 मिनट लगेंगे मुझे सेटिंग्स करने के लिए, ताकि हमें अच्छा पड़े वेन एवर वी आर वॉचिंग। दिस इज फाइन। तो लेट्स गो इन द विंडो कैप्चर। यहाँ पर देखिए हमें सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। ये जूम पर सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो देखते हैं पहले इसके कॉन्फ़िगरेशन को। ऐसे आई गेस ये डिस्कस किया था मैंने भी, अभी जस्ट पढ़ा है इसको। अच्छे से पढ़ते हैं थोड़ा, बिकॉज टाइम है लॉन्च को। Lumelite 4 satellite is developed by Institute of Infocom Research, a Stars and Satellite Technology Research Center, STAR। ओके, Lumelite एक सैटेलाइट है, Lumelite 4। उसके बाद मेन पेलोड तो यहाँ पर है, TELEO-S2 अब सिंथेटिक अपर्चर रेडार। और बाकी आई गेस जो बेलेट्रिक्स एरोस्पेस का पेलोड है उसके बारे में डिस्क्लोजर नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग अबाउट बेलेट्रिक्स। आई गेस जीएस ने एक वीडियो बनाया था उसके बारे में। दैट इज ओनली थिंग दैट आई वाज एबल टू सी अबाउट दैट पर्टिकुलर रॉकेट, नथिंग एल्स ओवर देयर, व्हिच इज स्ट्रेंज। ओके, फ्लाइट सीक्वेंस, ignition, separation, ignition of PS2, separation of the heat shield, nothing else over here. Let's see any updates on ISRO. ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। नो, इसरो का स्ट्रीम तो नहीं स्टार्ट हुआ है। और इज इट, हैज इट स्टार्टेड? PSLV launch live, ISRO official and live stream. Okay, the stream has started as it seems. Let's just change it in our browser. PSLV C55 में ब्राउजर का ऑडियो आ रहा है। पेलोड ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल का इस्तेमाल कर 8 निर्धारों को अंतरिक्ष प्रयोगों में तकनीक प्रदर्शन के रूप में किया जा रहा है। यह प्रमोशन PSLV का 57वां प्रमोशन है तथा कोरोलोन कॉन्फ़िगरेशन पे यह 16वां प्रमोशन होगा। PSLV C55 टेलियोस 2 मिशन पूर्वी दिशा का मिशन है। हमारे भू स्थित ट्रैकिंग स्टेशंस पूरी तरह अपनी नज़र यान पर बनाए रखते हैं, जिसमें हमें यान से जुड़े सभी आंकड़े वास्तविक समय पर यहाँ उपलब्ध होते हैं। इस मिशन के लिए शार्प और ब्लेयर ब्रूने तथा बायक स्थित ट्रैकिंग स्टेशंस की मदद से यान के आंकड़े टेलीमेट्री द्वारा हमें प्राप्त होंगे। -4 minutes. All right, T-4. It is T-4 currently. 4 minutes for launch. तो launch के लिए सिर्फ 4 मिनट बाकी है। And I hope आपको ब्राउजर से ऑडियो आ रहा है। If not, I'll tell you what's happening over there. We are about 3.5 minutes from the launch time. All right. PSLV बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं C55 on the PSLV launch का, pad. okay? And
Speaking about the weather here in Let's go for Sriharikota, the launch. The weather is there good are actually. tiny tufts Let of us change clouds, our view but the winds are to the benign. same as. It's a go for the launch. Alright. Oh wow, the weather is actually very good. Really good. T minus 3. T minus 3. अब हम उड़ान से 3 मिनट की दूरी पर हैं। Oh. So the इस biggest मिशन payload के Helios मुख्य 2 उपग्रह is of हेलियोस 2 जो 741 कि kilograms. 741 केजी का है I think we missed those और details. ल्यूमलाइट 4 16 केजी के let's उपग्रह हैं। इन्हें 586 किलोमीटर The की ऊंचाई altitude पर of 10 डिग्री के orbit झुकाव तथा 7.066 is किलोमीटर about प्रति सेकंड की सापेक्ष 586 गति के साथ kilometers. निर्धारित कक्षा पर The लगभग centricity is 20 zero. मिनट पर स्थापित Launch कर दिया pad is जाएगा। FLP launch pad, the one इसके which we बाद are launching चतुर्थ from. चरण को अंतरिक्ष प्रयोगों के कार्य The के लिए azimuth सक्षम degree किया will be जाएगा। 104. Okay. The orbital platform over here is L 1.6. Okay. Expected period of operation is 1 month. This is very interesting. इसका मतलब जो पोएम ऑर्बिटल मॉड्यूल है वो 1 महीने के लिए चलेगा. Okay, right. Automatic launch sequence progressing unhindered. -2 minutes. All right. So automatic launch system जो है वो activated है. The automatic Currently launch जो sequence progressing unhindered. रॉकेट है वो अंडर एक्टिव गाइडेंस For में है 90 to 100 seconds. एंड to उसके go बाद for वो the क्लोज launch. लूप में जाता We है. are अगर about एक to कोई इशू होगा जैसे कि SSLV रॉकेट के साथ हुआ था, For the 90 to failure 100 was because the seconds closed loop to go cycles for the IMU, launch. which is the inertial motion unit, was not able to do its job. All right, weather is very good. एक काम करेंगे, we'll launch our rocket as soon as PSLV launch होता है. But एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है that ISRO's rocket will be much faster than our rocket in Kerbal Space Program. That's not because of frame rate or anything. It's simply because of the overall size. परियोजना एक नवीन और संवर्धित सुविधा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अंतर्गत जो T minus 1. समाकलन स्थानांतरण All right, T परियोजना minus और 1 minute. नवीन और संवर्धित सुविधा है Minus सतीश 50. धवन अंतरिक्ष केंद्र के अंतर्गत Right. जो समाकलन स्थानांतरण और प्रमोशन की नीति पर तैयार की गई है को दुगनी करने में हम सक्षम होंगे। Minus 45. इससे प्रथम प्रमोशन मंच से एक साल में प्रमोशनों की संख्या को 40 दुगनी seconds करने में हम launch time. सक्षम होंगे। -35 seconds. Minus 35. -40 seconds. अब हम उड़ान से 30 सेकंड की दूरी पर T minus 30. आप देखेंगे आरसीटी का प्रज्वलन -2.8 सेकंड्स पर Minus 25. उड़ान से 30 सेकंड की दूरी पर का प्रज्वलन सर्वप्रथम आप देखेंगे आरसीटी का प्रज्वलन -2.8 सेकंड्स पर तत्पश्चात कोर बूस्टर का प्रज्वलन T0 पर होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off. 7, 6, 5, All right. I am. 1, 0. PSLV All C55 right. has lifted off and passed the tufts of clouds. And the PSLV भव्य नजारा C55 has lifted off and passed the tufts of clouds. सफलतापूर्ण उत्थापन tracking. भव्य नजारा PSLV C55 का सफलतापूर्ण उत्थापन PSLV C55 प्रमोचक यान अपने निर्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर हम यहाँ महसूस कर रहे हैं। यह बहुत उत्साहवर्धक होता है। दर्शकों का उत्साह You can see the boom. I'll say the dust cloud or the cloud because of the high speeds and the altitude, पूरी तरह which सामान्य are correlating in PSLV as well as our Kerbal Space rocket. PS1 is in main auto. PS1 developing nominal Plus thrust 1. of 4,800 kilonewtons. पहले चरण के प्रज्वलन के दौरान +1 minute. एरोडायनामिक संरचनात्मक और नियंत्रण तंत्र की दृष्टि से पहले चरण के प्रज्वलन के दौरान रॉकेट वायुगतिक यानी एरोडायनामिक You can see it is going to the max Q currently. की दृष्टि से बहुत कठिन The rocket is going to the max Q, which is the maximum aerodynamic pressure that it is going to face. PSLV lasts for 110 seconds. And yes, we have
Stage Burn off 1 first stage of PSLV प्रथम lasts चरण for पूरी तरह 110 सामान्य seconds. निष्पादन करते हुए complete. करीब 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। प्रथम चरण We पूरी तरह go सामान्य with the निष्पादन करते second हुए stage तथा right here. करीब 4800 किलो न्यूटन का All right. प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। सेकेंड स्टेज अभी हम लॉन्च कर पाएंगे। सेकेंड स्टेज इंजन स्टार्टेड। ऑलराइट, सेकेंड स्टेज इंजन हैज स्टार्टेड। कार्यकाल के पश्चात से यान से पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण जो कि तरल नोजक वाला चरण है, प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे यान से पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक वाला चरण है उसे प्रज्वलित किया गया है। Quick succession of several events. Presently, the altitude is 80 kilometers. Second stage ignition and we are 148 seconds from the launch. Presently, the altitude is 80 kilometers, and we are 148 seconds from the launch. All right, so the PSLV rocket is currently in closed loop guidance, which means based upon its flight data, it is automatically going to the position that it is supposed to. अपनी दिशा निर्धारण कर रहा है। कवच का पृथक्करण है। इसके बाद अभी हीट शील्ड सेपरेशन होगा, which will be very soon. ऊष्मा कवच It's का T+3. पृथक्करण है। तो अभी हीट शील्ड सेपरेशन होगा, I guess very soon. All right, payload fairing has been separated. Atmosphere, the payload fairing has been ठीक है, fairing का separation हो चुका है। having cleared the dense atmosphere, the payload fairing has been jettisoned. Right. ऊष्मा कवच के हट जाने के PS2 बाद stage Okay. is currently thrust. यान क्रूज लूप गाइडेंस में काम कर रहा है। ऊष्मा कवच के हट जाने के बाद Interesting. और हमारा रॉकेट भी अच्छा परफॉर्म यान क्रूज लूप गाइडेंस में काम कर रहा है और जिसमें रेट जायरोस और एक्सेलेरोमीटर की मदद से वर्तमान स्थिति का पता लगाकर रॉकेट अपनी अभिवृत्ति नियंत्रण करता है और उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर होता है। Stage is powered by highly reliable Vikas engine that develops 799 kilonewtons of thrust using the PS2 stage is powered by highly reliable UH-25 as fuel and N2O4 is oxidizer. Let's switch to the launch itself. द्वितीय चरण का प्रज्वलन काल 150 सेकंड का है। द्वितीय चरण का प्रज्वलन काल करीब 150 सेकंड का है। तत्पश्चात इसे शट ऑफ कर यान से पृथक कर दिया जाएगा। 150 seconds is the total burn time of PS2. The second stage has been separated. Currently, Sharan Porter account stations tracking. PS3 thrusting currently. द्वितीय चरण के सफलतापूर्वक पृथक्करण के पश्चात तृतीय चरण जिसे हम HPS-3 के नाम से जानते हैं उसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वह सामान्य कार्य कर रहा है। यान अपने निर्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर होता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ PSLV C55 तृतीय चरण का प्रज्वलन काल लगभग 125 सेकंड का होगा। तत्पश्चात कोस्ट फेज की शुरुआत होगी। We are 325 seconds past the launch time. Third stage of PSLV currently thrusting, developing nominal thrust 240 kilonewtons. This stage will increase the relative velocity by 3 kilometers per second and then it burns out and continues to coast along with the ongoing fourth stage and the payload. The burn time for HPS-3 is 125 seconds. यान के सभी तंत्र पूरी तरह सामान्य निष्पादन करते हुए अब हम 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड।
Third stage action completed. तृतीय चरण का कार्यकाल पूरा हो चुका है तथा कोस्ट फेज की शुरुआत हो चुकी है. Vehicle in combined hosting. The combined coasting of PS3, PS4 and the satellite is currently in progress. This coast will last for 200 seconds for this mission. Vehicle performance normal. 7 minutes. यान अपने निर्धारित कक्षा की ओर बढ़ता हुआ. यह कोस्ट फेज जारी है. तृतीय चरण के पृथक होने के पश्चात चतुर्थ चरण के प्रज्वलन में कुछ समय होगा. कुछ समय पश्चात चतुर्थ चरण का प्रज्वलन किया जाएगा. The fourth stage of PSLV is scheduled to commence its operation at 982 seconds into the flight. So In the meantime, let me throw some light on the passenger satellite station. And 200 seconds की cruising के बाद अभी जो PS3 और PS4 connected है वो detach होंगे and then will work for ahead. So PS4 which is the poem module वो बाद में उसके बाद deploy होगा. Partnership between DSTA from Government of Singapore and ST Engineering. The services being provided through NSIL, the commercial arm of Indian Space Research Organization. Its predecessor, Teleos 1, also had been launched by a PSLV in the year 2015. Teleos 2 carries a synthetic aperture radar payload. It will be able to provide all-weather, day and night coverage and capable of imaging at 1 meter full polarimetric resolution. The spatial resolution of radar data is directly related to the ratio of the sensor wavelength to the size of sensor's antenna. That means to be able to get higher spatial resolution for a given wavelength, the antenna has to be impracticably big. Synthetic aperture radar is an answer to this objective, in which a sequence of acquisitions from a shorter antenna are combined to simulate a much larger antenna. टेलियोस 2 इस मिशन में मुख्य उपग्रह के रूप में है. टेलियोस 2 एक भूप्रेक्षण उपग्रह है जिसे DSTA सिंगापुर और ST इंजीनियरिंग सिंगापुर द्वारा निर्मित किया गया है. यह ऐसा दूसरा उपग्रह है जो इसरो द्वारा प्रमोचित किया जा रहा है.